पंजाब के स्टार प्रचारक रहे राघव चड्ढा जी, वो हमारे यहाँ से विधायक हैं। जब उनके एरिया में ये प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ रही है, 2.5 साल का उनका टेन्योर कंप्लीट होने जा रहा है, 2.5 साल में उन्होंने इस हॉस्पिटल के बारे में कोई सुध नहीं लिए। वो लगभग 1.5 साल से वो पंजाब विजिट कर रहे हैं, उनसे एरिया के लोग मिलने जाते हैं तो वो मिल नहीं पाते। कम से कम उनको 10 मिनट के अंदर अंदर किसी ना किसी, या तो ऑक्सीजन की जरूरत थी, या फिर उनको कोई ऐसा इंजेक्शन की जरूरत थी, या फिर और ऐसी सुविधा जो एलोपैथी हॉस्पिटल में मिल सकती थी। अगर हमारे पास यहाँ पे जैसे नज़दीक में कोई सरकारी अस्पताल हो तो मेरे ख्याल से 20% लोग बचाए जा सकते थे। वो जो हमारा पॉपुलेशन क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के अनुसार हम डिस्पेंसरी के अलावा आपको ना पॉलीक्लिनिक की सुविधा दे सकते और ना जच्चा बच्चा वार्ड का सुविधा दे सकते। Healthcare facility at subsidized rate has been one of the major planks of governance under the Aadmi party-led government in Delhi, something which worked for the party in the recently concluded Punjab Assembly elections. This healthcare model is basically a 3-tier structure comprising of a mohalla clinic, followed by a polyclinic, and finally a government hospital that aims to provide universal health coverage to citizens. But all doesn't seem to be well with this 3-tier structure, and today we will focus on incomplete projects related to polyclinics in Delhi. The empty plot that you see behind me is a 2700 square meter area which was supposed to be a government hospital, and its approval was given way back in 2013. Newslaundry has accessed documents which suggest that in 2017 budget was approved by the Delhi government's PWD or Public Works Department, and yet the project was not completed, forcing locals to resort to private healthcare facility. 28-year-old Aditya, a trader by profession in Delhi's Narayana, began filing RTIs soon after the first wave of COVID. This pursuit was inspired by years of demand by locals for a government hospital in the immediate vicinity of Narayana. For 6 months, he didn't get any response from the Public Works Department. Finally, the documents procured in response to the RTI revealed that a project related to a 50-bed hospital in Narayana Vihar was approved way back in 2013. 2013 में जो हमारे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, तो उस टेन्योर में हमारा एक हॉस्पिटल की ज़मीन डीडीए से हैंडओवर की पीडब्ल्यूडी को। उसके बाद सरकार चेंज हो गई, गवर्नमेंट 1 साल के लिए जो अनस्टेबल गवर्नमेंट आई उसमें कोई काम नहीं हुआ। 2015 में फिर कागजी कार्रवाई स्टार्ट हुई हॉस्पिटल की, तो उसमें हमारा हॉस्पिटल पास हुआ। एक 50 बेड के लिए हॉस्पिटल था, 2700 स्क्वायर मीटर का जो प्लॉट डीडीए ने हैंडओवर किया था उस पर हॉस्पिटल बनाने का काम शुरू हुआ। जो हमारे उस समय के एमएलए थे विजेंद्र गर्ग जी, उनका ये लेटर भी है जिन्होंने लिखा है कि पूरे विधानसभा में कोई भी हॉस्पिटल नहीं है तो हमें इस हॉस्पिटल की कितनी ज़रूरत है। जब एक एमएलए ऐसी बात लिख रहा है तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। एमएलए साहब ने भी लिख के दिया कि हम सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल पर डिपेंड है कि एक सरकारी हॉस्पिटल हमें विधानसभा में चाहिए, जो कि यही था। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे ये 2017-18 के अंदर इसको 100 बेड का हॉस्पिटल किया गया 50 से, रिक्वायरमेंट को देखते हुए पीडब्ल्यूडी ने इसको 100 बेड का किया। 2019 में एक अमेंडमेंट आई जिसके बाद इसको स्मार्ट हॉस्पिटल या पॉलीक्लिनिक का नाम दिया गया। स्मार्ट हॉस्पिटल एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसमें मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये स्मार्ट हॉस्पिटल क्या है, इस हॉस्पिटल में साफ लिखा है स्मार्ट हॉस्पिटल कंप्राइजिंग ऑल ओपीडीज एट ग्राउंड फ्लोर अलॉन्ग विद आयुर्वेदिक होम्योपैथिक यूनिट, ये डेंटल आई केयर यूनिट। मतलब इसमें किसी भी तरह की इमरजेंसी के लिए कोई प्रोविज़न नहीं है। नारायणा गांव की इतनी बड़ी आबादी है जहाँ 45 से 50 हज़ार लोग रह रहे हैं, वहाँ इमरजेंसी में वो लोग 8 से 10 किलोमीटर सरकारी हॉस्पिटल पे डिपेंड है, या उन्हें फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है जहाँ पे उन्हें नर्सिंग होम्स में और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है जहाँ पैसों की खुली लूट है। Parmeet has been running a taekwondo training institute in the neighborhood. Lack of government healthcare facilities impacts his students who often need immediate medical attention. While some of his students won laurels in the recently concluded Taekwondo Championship in Delhi, Parmeet thinks proper health facilities can help students achieve more at international platforms. मार्शल आर्ट जो गेम है वो फाइटिंग का गेम है, कॉम्बैट गेम है, तो उसके अंदर इंजरी का 99% चांस रहता है कि इंजरी होगा ही बच्चे को। तो अगर इंजरी होगा, जो बच्चा
पैसे से स्ट्रांग है वो तो पब्लिक हॉस्पिटल्स में दिखा सकता है, लेकिन जो नहीं है उसको लेकर कहाँ जाएं? क्योंकि हमें रिकवरी बहुत जल्दी चाहिए होती है, किसी को चोट लगती है तो, लेकिन हमें लेके भागना पड़ता है उसको सफदरजंग हॉस्पिटल, और हमारे आसपास के एरिया में कोई भी नहीं है। और प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ भी जाएंगे वहाँ पहले पैसे डिपॉजिट कराएंगे, उसके बाद इलाज होगा, टेस्ट होगा। एक बच्ची है हमारी आदिति, जिसके पैर में इंजरी हो गया था नी के अंदर, और उसको हमें इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था, लेकिन हम बहुत परेशान हो गए थे कि इतनी जल्दी कहाँ लेके जाएं उसे। तो बड़ी मुश्किल लगी हमें उसको कराने में ट्रीटमेंट उसका, क्योंकि हमें इमीडिएट चाहिए था। अगर हमारे नारायणा गांव में कोई हॉस्पिटल होता गवर्नमेंट तो हमें इतनी दूर नहीं भागना पड़ता, बट अभी वो ठीक है। बट अगर वो टाइम से अगर हमें पास में मिल जाता, हमारे पास हॉस्पिटल होता नारायणा गांव में, तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता। Some of the residents in Narayana have now come together under the ambit of Rajput Yuva Sangh, which aims to raise issues regarding basic amenities in the capital. They say that their ancestors have owned this land for hundreds of years before handing it to the British at the time of capital formation. Today, as civilians, they are denied access to the nearest army hospital. गाँव वालों को कोई एंट्री नहीं है हमारी वहाँ पे, जबकि वो हमारी ज़मीनों के ऊपर बना हुआ है, बेस हॉस्पिटल है आर्मी का, तो हमें वहाँ इलाज की सुविधा नहीं मिलती। देखिए, कोरोना के समय में हमारे नारायणा गांव में जितनी भी मौतें हुई हैं, उनमें से बहुत सी मौतें ऐसी हैं कि कम से कम उनको 10 मिनट के अंदर अंदर किसी ना किसी, या तो ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, या फिर उनको कोई ऐसा इंजेक्शन की ज़रूरत थी, या फिर और ऐसी सुविधा जो एलोपैथी हॉस्पिटल में मिल सकती थी। अगर हमारे पास यहाँ पे जैसे नज़दीक में कोई सरकारी अस्पताल हो तो मेरे ख्याल से 20% लोग बचाए जा सकते थे। 66-year-old Ashok Tanwar has been paralyzed since 2014. Owing to diabetes, foot sores soon led to gangrene, due to which his left foot had to be amputated last year. His family spent around 6 lakh rupees in surgical operation. Tanwar's son today spends 5 hours at Safdarjung Hospital for regular checkups of his father. The family wonders if it could have been better had there been a polyclinic nearby. In a letter dated 18 January 2017, PWD's Chief Project Manager in the Health Department directed the Executive Engineer to begin planning for a polyclinic project by appointing a consultant. In a letter dated 3rd May 2018, Delhi Government's Directorate General of Health Services gave a go-ahead for the appointment of security guards at the hospital site. In a letter dated 28 July 2020, the then MLA from Rajinder Nagar, Raghav Chadha, asked the Additional Director General of Health whether an NOC has been issued for the land. In a meeting on 12 January 2021, which was attended by Delhi's Health Minister, it was decided to set up a homeopathic and Ayurvedic unit along with a naturopathy center at the polyclinic, and that architectural plans be shared with the minister within 3 weeks. It's 2022 and at the approved site, there is no sign of construction. We didn't see any security guard either at the plot. The whole Narayana, which the village has a population of almost 1 lakh, and the other people who live in the vicinity are more than 50,000. Automatically, we need more than 500 bed hospital over here, and government has failed. And this project is nothing new. The past budgets of Delhi government has been saying that we have a surplus budget every year. What does that mean? That they have already completed their projects, and here we are. There is nothing has happened on ground, and they are paying money to security guards for this land. There is no boundary wall. If you see, it's all broken. The gate, the main gate which we came from, that is also broken. That is the reason these spaces are actually spaces which are enjoyed by antisocial elements. At this mohalla clinic in Narayana, this board announced the timings to be between 8 am to 2 pm. At 2:07 pm, when we reached the gate, this handwritten cardboard poster informed that the clinic was still open. Inside, no staff members were present, with all rooms being locked. These tokens lying at the reception and dust on the chairs suggested that this clinic had been shut for weeks at least. This is the second such area in Delhi's Tapas Heda colony, which comes under the Patiala Assembly constituency, where approval was given
for the construction of a polyclinic. In fact, in a letter dated April 2019, the SDM of Kapas Hera informed the concerned official at the Directorate of Health Services, saying that this particular area is suitable and apt for the construction of a polyclinic or dispensary. And yet, as you can see, there is no semblance of a polyclinic here. In fact, the area has been encroached upon by some locals who are using it for putting their cow dung cakes and dumping cow dung here. And the initial approval for a polyclinic was given in 2018. In Kapas Hera's Kangan Heri village, locals have accessed land revenue records related to construction of hospital. In a letter dated 7 February 2018, Additional Director Planning informed the Chief District Medical Officer that the land provided by villagers was, quote, appropriate for the construction of a polyclinic or hospital, unquote. Land revenue records prove that 3 patches of land, plot number 13, 18 and 22, were given by the locals in the name of construction of a polyclinic or dispensary or hospital. But the authorities changed their mind later, saying that as per population, there is no need of a polyclinic now. जो ये ज़मीन जो हमारे ग्राम सभा में की थी डिस्पेंसरी के लिए, अब इसमें लोग बाग कब्जा कर रहे हैं, अपने सामान रख रहे हैं, अपना गोबर पाथ रहे हैं या इसको घेरने की कोशिश करें। तो हम तो बहुत दिनों से, हम तो कम से कम 10 साल से इसके पीछे लगे हुए हैं कि यहाँ डिस्पेंसरी बने, जच्चा बच्चा वार्ड बने या कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल बने, लेकिन कोई सुनाई हमारी हो नहीं रही मैडम। पहले तो CDMO साहब ने रिस्पॉन्स, जब हम उनके संपर्क में गए और जो है ना हमने बताया, तो उनका रिस्पॉन्स शुरू में ठीक मिला हमें, लेकिन कुछ समय के उपरांत जो है ना उन्होंने जो है ना मतलब प्रतिक्रिया जो है ना वो ठीक नहीं दी और उन्होंने कहा भाई ये तो जो डिस्पेंसरी जो चल रही है ये एज इट इज चलेगी और जो ना जो आप जिस लैंड का जिक्र कर रहे हो वो हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट है, आप वहाँ जाइए। तो हम उनसे मिले, वहाँ जाने के बाद में उन्होंने कहा ठीक है, हम इस पे जो है ना मतलब आपके यहाँ का जो भी आपकी जो एरिया की पॉपुलेशन के अनुसार जो पॉसिबल हो सकता है वो बनाएंगे स्कीम आपकी। लेकिन बाद में उन्होंने स्कीम को रिजेक्ट करके कह दिया कि वहाँ जो है ना हम ये नहीं बना पाएंगे, क्योंकि बामडोली में भी हमने एक फ़ाइल पुटअप की थी और वो फाइल जो है ना रिजेक्ट हो गई है, तो हम इस तरह की एक्सरसाइज अब आगे नहीं करना चाह रहे हैं। This government dispensary in Kangan Heri caters to around 30 to 40 persons daily through its homeopathic and an allopathic center. Limited time hours of the dispensary means this health center is not enough for locals. This mohalla clinic situated inside the premises of a government school was shut 3 months ago. ऐसे है कि होम्योपैथिक तो लोग बाग अभी का ज़्यादा विश्वास नहीं करते, चाहे अच्छी भी हो, वहाँ तो पेशेंट कम आते हैं और जो है थोड़ी बहुत छोटी मोटी बीमारी हो, जिसके खांसी जुकाम या कोई थोड़ी मोटी चोट लग जाए, उसके लिए एक डॉक्टर लेडी डॉक्टर यहाँ है और जो ना वो थोड़ी दवाई वाई दे देते। लेकिन अगर कोई आदमी ज़्यादा बीमार है वो है तो उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है या सरकारी हॉस्पिटल में जाना पड़ता है अपने ट्रीटमेंट के लिए। यहाँ कोई ऐसा जरिया नहीं है कि भाई उसको यहाँ एडमिट करें और उसको ट्रीटमेंट दे सकें। On 10th November 2015, Chief Minister Arvind Kejriwal had inaugurated the first polyclinic in East Delhi's Kanti Nagar. 100 to 150 polyclinics were promised, with at least one for every constituency. On 23rd December 2019, the total number of polyclinics reached at 26, with the inauguration of a new one at Bindapur near Uttam Nagar. On 24th March 2020, while presenting the budget, Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia allocated over 7,000 crore rupees for healthcare sector, giving an approval for upgradation of 94 existing dispensaries into polyclinics. On 8th March 2022, Health Minister Satyendra Jain inaugurated a polyclinic in Shahadra, with the official statement noting that a similar facility will be opened in Simapuri soon. The target for the state government was still that of 150 polyclinics. Among 11 sites mentioned in official records where polyclinics were supposed to be built, Newslaundry went to 2 more locations. In Shahabad Daulatpur, there are only 2 maternity care centers and an Ayurvedic healthcare center for now. Locals in Nasirpur were not aware of any polyclinic in the area.
While the beaming faces of local MLAs and candidates, hopeful of making it in the forthcoming municipal elections, adorn the walls in Narayana and Kanganheri, both AAP as well as BJP are yet to catch up with issues relevant to people. This discontent among Aam Aadmi regarding polyclinics, however, does show the other side of the Delhi government's much-acclaimed health model. We want to bring you the stories that matter, whether it be through interviews, ground reports, videos, or podcasts. So, if you believe in our vision, do head over to our website newslaundry.com and click on the subscribe button.